Hi, and welcome to today's episode of Guideline Review of the Week. I, Dr. Aditya, today shall be discussing with you a topic that is personally very close to my heart, a topic that I personally believe is something that not a lot of residents are trained for, and the fears from the seniors are quite validated given the risks that are associated with this topic. But I would want to give you all a proper approach that has been stated by the Royal College of Obstetricians and Gynecologists in their 2017 guideline, a green top guideline that they had issued. And I would also state a bit of history that surrounds this topic, a bit of controversy that has been attached to it, and what is the current scenario when we talk of breech presentation. So, welcome to today's episode in which we shall be discussing breech presentation and its intricacies in our today's episode of Guideline Review of the Week. So, when I talk of history, what is the history that is attached to this? Something that I mentioned earlier that I'll be mentioning about the history that is attached to this topic. So, there were multiple trials that have been done for this topic, and the two major trials have been the term breach trial, that is the TBT, the Hannah's term breach trial as they call it, which was done in the year of 2000, and the other study that was done after that, which was a pre-MODA study. So a lot of pessimism and the worry that surrounds breech presentation today stemmed from how this term breech trial was perceived. This was a trial that was undertaken in over 2000 women across 121 centers where they tried to deliver vaginally breech presentation, and they studied the effects of it, and it gave a clear cut demarcation that cesarean sections were having a much lesser comorbidity in terms of survival of the fetus and long-term morbidities in comparison to breech vaginal deliveries. But there were a lot of controversies that were attached to it, and those controversies stem from the fact that the inclusion criteria to this study was not taken into consideration too well. There were a lot of things that were not being fulfilled. To start off with, a basic thing that they had mentioned that all these women should be the ones who should be enrolled who are not yet in labor. Yet, despite this, they had encouraged women who are in active labor to be a part of the study. Also, they had done a lot of deliveries without doing a prior ultrasound for those patients. So, an ultrasound to determine whether there is a footling presentation or whether there is even a slight amount of hyperextension to the fetal neck inside. They had not checked that. So, almost 31%, that is one third of the patients, did not have an ultrasound. Another 30% of women did not have any senior obstetrician, and 13% of women did not have any obstetrician at all while they were being delivered breech vaginally. So obviously the outcomes are going to be poor for the babies, and that was what happened, that there were 16 mortalities, there were 16 fetal deaths that happened, which is why in fact the study had to be terminated before time. And out of the 16, 13 were during breech vaginal, whereas 3 were during LSEs. But because of all these criteria that were being flouted, this was not a fair study that was done. Also, they mentioned that all those babies which had died by during delivery, vaginal delivery, they also had other comorbidities, including a few already having hydrocephalus, one of them being stillbirth. So all these factors surrounded it. So to counter this, a pre-MODA study was done later on, which told us that cesarean section and vaginal delivery have an almost similar rate of mortality and morbidity for the fetus, just that the Apgar scores were slightly on the lower side for breech vaginal delivery, but they recovered after a while, and hence there were no long-term morbidities. So today, as it stands, because of all the medical legal fears, cesarean section is still the much more followed, way of management for patients who present with breech presentation in labor. So what do the guidelines status? So the first thing that they ask us is, what should be the female be informed about? So what should be the information that should be given to women who present to us with breech presentation? The first thing is they should be offered external cephalic version. So when I speak of external cephalic version, it should be offered at around 36 to 37 weeks. It is 37 weeks for multigravidas, and for primigravidas it is 36 weeks.
You have to do it at a point when the baby is not even too big, so that the ECV doesn't happen only, nor is it done so early that it reverts back to its breech presentation. So these women should be offered ECV. Now ECV is something that not a lot of people are trained with. In fact, even where I did my residency, we did not do ECV because we did not have the facilities available, nor were there people who were trained enough to be practicing this external cephalic version. But it is something that is done a lot in classical obstetric centers and even abroad, and hence it is something that a skill that should be inculcated and that should be learned. And all these women should be given, if there is no contraindication to vaginal delivery, they should be given a trial of ECV inside an operative setup. Following which, if they are going to decline that, or if they have an unsuccessful ECV, then you can go ahead by giving them an option of delivering the breech vaginally or by cesarean section. So assuming that the ECV failed, or the female said that I do not want to undergo that external cephalic version, and now the baby is in breech presentation, what should we be doing? What should I be telling her about the risk of neonatal morbidity? What should I be informing the patient about? So I should be telling her that if your baby is in breech presentation and if I'm going to be doing a cesarean section, there is a risk of fetal mortality of 0.5 every 1,000 with cesarean section. Whereas if I'm going to deliver you vaginally, the baby vaginally, it is going to be 2 in 1,000. So almost a 4 times increased risk. But there needs to be a factor that has to be understood here, is that the risks that are increasing while doing a vaginal delivery, they are because of 3 factors. So those 3 factors are the ones that we are going to be reading henceforth. Out of those 3 factors, not all of those 3 factors are the ones that lead to an increased risk of neonatal mortality when I'm delivering the baby by breech presentation. Because as you can see here, that even if it was a cephalic presentation baby and I would have delivered it vaginally, there was a chance of dying of 1:1,000. So there was that added risk of that vaginal delivery anyway, irrespective of the presentation of that baby, that gave it a higher chance of death by dying when I deliver it vaginally. So it was not all solely because of it was a breech presentation that I've delivered vaginally that the mortality risk increased. Apart from that, there has to be a known fact that there has to be expertise in delivering these babies vaginally before you undertake this thing. What should I be giving? What should I be telling these women now that I've told them कि if you're going to be doing a cesarean section, अगर तुम cesarean section करते हो, so you have a lower risk of having a bad fetal outcome. Then what should be the risk that I'm telling to the mother herself? तेरे को क्या खुद को risk होने वाला है तेरे अगले pregnancy में if I'm going to be doing a cesarean section right now to keep your fetus safe? So I'm going to be telling her that in the next pregnancy there is going to be a higher increased chance of repeat cesarean section, as well as the classical complications of previous LSCS, which includes increased chances of placenta accreta spectrum, wherein the placenta is adhered to the scar site, or increased risk of uterine rupture in the subsequent pregnancy. Apart from the fact that in her current pregnancy as well, जो भी उसके cesarean section करने के जो risks है in the current pregnancy, things like bowel injury, bladder injury और uterine hypotonia, ये सब तो है ही, but apart from that in your next pregnancy you are going to be at a higher risk of having these classical cesarean section complications. So you have to understand that by delivering this baby by cesarean, you are reducing a marginal risk of having neonatal mortality, but you're also putting yourself at a slightly higher risk of these complications. So I'm going to be telling this about the female and the baby herself to that mother. Then she says कि sir ठीक है, मुझे cesarean section समझ गया. What if I'm going to consider having this baby vaginally? If I'm having a breech baby right now and I want to deliver it vaginally, then I'll be telling her that I'll need to look at few factors to ensure that there is not a higher risk of failure of delivering vaginally. So she asked me कौन से factors है sir? तो सबसे पहली बात मैं अल्ट्रासाउंड करके देखूंगा कि बेबी का नेक एक्सटेंडेड है क्या, एक्सटेंडेड नेक या फिर बहुत ही कंप्लीटली एक्सटेंड रहेगा तो जिसको हम कहते हैं स्टार गेजिंग बेबी. स्टार गेजिंग बेबी का मतलब क्या है? स्टार गेजिंग बेबी या स्टार गेजिंग फीटस, इफ दिस इज योर यूट्रस एंड इफ दिस इज योर बेबी, ये उसके लेग्स है, ब्रीच है नीचे. इफ द बेबीज हेड इज गोइंग टू बी ऐसे एक्सटेंडेड, द बेबीज आईज एंड माउथ ऐसे ऊपर, दिस इज लिटरली लाइक वो बेबी एक स्टार को आसमान में देख रहा है, ये हाइपर एक्सटेंडेड बेबी, एंड हेंस वी कॉल इट एज अ स्टार गेजिंग बेबी. दिस हैज अ वेरी पुअर
chance of delivering vaginally, and these women have to be told that we will not give you a trial of vaginal birth. Apart from that, a higher fetal weight above 3.8 kg, so basically almost bordering macrosomia. If you are going to be talking Indian setup में तो 3.8 kg के ऊपर भी हम लोग macrosomia ही बोलते हैं, because our fetal और maternal pelvis is going to be much smaller than वो जो Caucasian, ये यूके में किया हुआ स्टडी है, ये जो Caucasian लोग वहां रहते हैं, their pelvises are massive, they are huge in comparison to Indian pelvis. So even 3.8 3.5 के ऊपर अगर बेबी है इंडियन सेटअप में, तो आई विल से कि 3.5 kg मान के चलो. If the baby weight is more than 3.5, do not try to deliver that baby vaginally unless the mother's pelvis is very roomy, is very good enough, adequate enough to deliver vaginally. So more than 3.8 kg, there is a higher chance of failure of vaginal delivery, and you might need to resort to a cesarean section eventually. Apart from that, if it is on the other side of the spectrum, if it is too low, and by too low I mean to say less than 10 centile. By less than 10 centile, I intend to say if it is something less than 2.2 kg, 2.1 kg, इन केसेस में क्या होने वाला है, अगर आईयूजीआर है, आई मीन वजन कम क्यों है, इधर इट इज प्रीटर्म या फिर इट इज आईयूजीआर. ये आईयूजीआर बेबीज में होता क्या है कि उनका जो हेड होता है ना, ये जो हेड होता है, इसका डायमीटर जो है वो एब्डोमेन से ज्यादा रहता है. ये जो हेड का डायमीटर है, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन द एब्डोमिनल डायमीटर. सो व्हेनेवर दिस बेबी इज गोइंग टू कम आउट वजनली, इसका जो बॉडी है इट वोंट डायलेट द सर्विक्स फुल्ली, एंड देयर इज अ हायर चांस ऑफ हेड एंट्रैपमेंट, एंड हेंस इन आईयूजीआर या फिर प्रीटर्म बेबीज वी ट्राई टू अवॉइड डिलीवरिंग vaginally, and hence lower estimated weight. If the baby's weight is low, then what is estimated, do not try to deliver this baby vaginally. Apart from that, if there is footling presentation, there is a higher chance कि अगर एक ही इसका पैर ऐसा एकदम नीचे है, एक ऐसा लटक रहा है, it will bring along with it the cord, plus there is going to be incomplete dilatation of the cervix leading to increased chances, क्योंकि दोनों अगर उसके जो limbs है वो flexed है and they are surrounding the cervix, they'll dilate the cervix quite well. But अगर एक footling एक सीधा है, it won't dilate it well, and not just it will lead to cord prolapse but also an increased risk of head entrapment later on. So footling presentation is a big no for vaginal delivery. And apart from that, if there is any evidence or any पॉसिबल चांस या फिर एनी एविडेंस दिख रहा है कि फीटल ब्रैडिकार्डिया है, फीटल टैकिकार्डिया, डू नॉट अटेम्प्ट, बेबी प्रोबेबली माइट ऑलरेडी बी हाइपोक्सिक एंड इट विल नॉट सस्टेन इट्स हेड एंट्रैपमेंट या फिर कॉर्ड कंप्रेशन जो होता है ब्रीच वजाइनल डिलीवरी में वेल. सो डू नॉट ट्राई टू डिलीवर बेबीज हु हैव डिस्ट्रेस वजाइनली. पेल्विमेट्री इज अ वेरी डाइसी टॉपिक, एंड इट इज सेड कि पेल्विमेट्री का रोल इतना हम लोग अब तक एविडेंस से बता नहीं पाया है कि पेल्विमेट्री एकदम अगर अच्छा निकला तो बेबी वजाइनली अच्छे से होगा. So what is the appropriate management for a patient who's coming to me in labor and is at term यानी 37 weeks के बाद है. So we have a score which I call as ZA score, Zatuchny Andros, या फिर कुछ बुक्स में Zatuchny Anderson scoring भी दिया है. This ZA score has multiple aspects attached to it, जिससे अगर स्कोर 0 से 4 के बीच में आ जाए then we say कि you should better do a cesarean section because you have a higher chance of having a failed vaginal delivery. So इस ZA score में there are multiple factors that we see. इसमें हम कुछ मदर के फैक्टर्स देखते हैं like gestational age and her parity status, her previous अगर ब्रीच था या नहीं था, and we see a few fetal factors, यानी बेबी का मैं वेट देखूंगा कितना है, बेबी सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है, एंड बेबी का स्टेशन क्या है. सो आई एम गोइंग टू बी सीइंग अ फ्यू फैक्टर्स ऑफ मदर, अ फ्यू फैक्टर्स ऑफ द बेबी, एंड आई एम गोइंग टू बी ड्राइंग आउट दिस स्कोर. अगर 0 to 4 के बीच में सिजेरियन करो, 4 से अगर ज्यादा है, जितना भी ज्यादा स्कोर हो, द मैक्सिमम स्कोर दैट वी कैन गेट इज 12. सो जितना भी ज्यादा स्कोर हो, 12 के पास हो, यू हैव अ हायर चांस ऑफ डिलीवरिंग वजाइनली. सो ऑब्वियसली इफ अ फीमेल इज हैविंग प्रीवियस मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज, इफ अ जेस्टेशनल एज इज अराउंड 37, if the fetal weight is less than 7, by the way pounds में है, if it is 7 pounds के आसपास है, if there is a chance कि पहले उसने ब्रीच डिलीवर किया है, and if the patient has come to me in active labor यानी 4 centimeter या beyond, she has a much higher chance of delivering this baby vaginally. So अगर मेरे पेशेंट पास आती है विदाउट लेबर, प्री लेबर आती है, what do I do? Should I be doing induction of labor by dinoprostone gel? Should I be augmenting it with oxytocin? They say that induction of labor with PGE2 gel is not recommended. Though a few centers do it, it is not recommended. They say it is not a good practice. Obviously, अगर मेरे पास पेशेंट लेबर के पहले आ रही है, उसका ZA स्कोर भी कम होने वाला है, क्योंकि स्टेशन ऊपर होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होगा, एंड हेंस द ZA स्कोर माइट ऑलरेडी इंडिकेट कि ये फीमेल को ट्रायल दो मत, इंड्यूस करो मत, डायरेक्टली LSCS करो. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑगमेंटेशन इज सेड कि हम कर सकते हैं, बट अच्छा खासा तुम लोग मॉनिटरिंग करो, डू मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी.
well enough, otherwise there can be a higher chance of having fetal distress. क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा यूट्रस है और मेरा अगर बेबी का हेड यहाँ पे है, ऊपर जो अपर सेगमेंट है यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, बाय द वे कॉर्नुअल एंड से कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू होते हैं। सो यहाँ पे हेड को कंप्रेस होके, बेबी के हेड को कंप्रेस होके हाइपोक्सिया के चांसेस बहुत ज्यादा है, डिसेलरेशन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अपर सेगमेंट में मस्कुलेचर भी ज्यादा थिक है रादर देन लोअर सेगमेंट। इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी बेबी का हेड यहाँ पे होता है, पैर यहाँ पे होते हैं, तो बेबी के हेड पे लोअर सेगमेंट दबाता है, एंड दैट कंप्रेशन इज नॉट टू सिग्निफिकेंट एंड हेंस देयर इज नॉट दैट हायर रिस्क। बट यहाँ पे इफ देयर इज एनी फीटल डिस्ट्रेस देन वी हैव टू इमीडिएटली डिलीवर दिस बेबी by cesarean section. We do not take a risk, we do not try to augment this with oxytocin. बट यू कैन ट्राई स्लो ऑगमेंटेशन, कम रेट पे चालू करो, स्लोली उसको ऑगमेंट करो, देन यू हैव अ गुड चांस ऑफ डिलीवरिंग दिस बेबी वजाइनली। व्हाट इज द मैनेजमेंट वन शी इज इनटू लेबर, कि मैं उसका फर्स्ट और सेकंड स्टेज कैसे करूं? सो व्हेन आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास पेशेंट फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ये सब में आती है लेबर में, तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग इज, मुझे पेशेंट को टैक्टाइल स्टिमुलेशन, यानी बेबी को अननेसेसरीली, जब भी बेबी बाहर आ रहा है, वंस द बेबी इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, आई शुड नॉट ट्राई टू टच द बेबी। क्यों? मेरा रूम में शायद एसी है, बेबी का अंदर का टेम्परेचर वाज 37 डिग्री 38 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर इज 25 30 डिग्री, एसी होगा तो इवन 21 22 डिग्री। माई ग्लव्स और माई हैंड्स आर गोइंग टू बी कोल्डर। When I touch that baby का limbs which are coming outside the vagina, वो बेबी को एकदम शिवरिंग होता है, द बेबी शिवर्स, एंड उसके जो हैंड्स है वो आड़े टेढ़े हो जाते हैं। आड़े टेढ़े होने के कारण इट माइट गेट एक्सटेंडेड, इट माइट गो अबव इट्स हेड, ऑल्सो द हेड माइट एक्सटेंड एंड इट माइट मेक माई डिलीवरी वजनली डिफिकल्ट। सो अवॉइड टचिंग द बेबी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एंड दैट एज लॉन्ग एज पॉसिबल इज until you have delivered until the level of the umbilicus. So that is one point that you have to be thinking about, you need to know. Also, do not unnecessarily try to give traction. Traction should be avoided, क्योंकि अगर तुम लोग ट्रैक्शन दोगे ना, so you will prevent natural full dilatation of the cervix. जो cervix अच्छा खासा dilate हो रहा था, you will end up manipulating that, you will end up messing with it and the dilatation won't take place and you will end up pulling the baby and ensuring कि उसको head entrapment हो. So you have to avoid it. यहाँ पे ऊपर जो एक पार्ट था गाइडलाइन का, उन्होंने दिया था that there are by the way two, whenever the baby is going into second stage is after full dilatation of the cervix till delivery of the baby's head. In second stage there are two phases, one is a passive phase followed by an active stage. पैसिव फेज में बेबी का हेड का डिसेंट ज्यादा होता नहीं, बट एक्टिव फेज में एकदम फटाफट होता है। सो दे से कि अगर बेबी का जो ब्रीच है वो अगर 2 घंटा भी, इफ द ब्रीच इज नॉट विजिबल डिस्पाइट 2 hours in the passive stage, then do not wait for too long, सिजेरियन सेक्शन करो। क्योंकि अगर ब्रीच नीचे नहीं आ रहा है, प्रोबेबली देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ किफेलोपेल्विक, यहाँ पे किफेलोपेल्विक नहीं होगा, यहाँ पे ब्रीच पेल्विक इनएडिक्वेसी होगा, किफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में से ब्रीच पेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा, एंड बेसिकली द बेबी इज नॉट प्रोग्रेसिंग फॉर सम रीजन। सो डू नॉट ट्राई टू डू मैन्युअर्स, खींचा खींची मत करो। if the passive phase of your second stage is going to be more than 2 hours, so अगर 2 घंटे से ज्यादा तुम लोग का बेबी सेकंड स्टेज में है, do not try doing anything, directly take the patient up for cesarean section. Also, when you start seeing कि बेबी अभी नीला पड़ रहा है, कि उसका टोन खराब हो रहा है, तब जाके फाइनली तुम लोग हाथ लगा के उसको फटाफट डिलीवर करने जाओ। दे से that a delay of more than 5 minutes from the delivery of the buttocks to the head, या फिर a delay of more than 3 minutes from the umbilicus to the head is okay. 3 minutes तक basically, if this is your baby's head, रेड पे ब्लैक पेन से करता है, if this is your baby's head, if this is your baby's body, यहाँ पे legs है, if this is your umbilicus, so baby के ब्रीथ से लेके यहाँ पे उसका ब्रीच है, सो ये ब्रीच से लेके हेड तक यू कैन गिव 5 minutes फॉर डिलीवरी स्पॉन्टेनियस, एंड अम्बिलिकस से लेके बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आने से हेड आने तक 3 minutes. सो बेसिकली इधर 5 minutes इसका या फिर 3 minutes इसका, अगर इससे ज्यादा हो देन यू कैन स्टार्ट डूइंग सम मैन्यूवर, बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज गोइंग टू बी हेड कंप्रेशन एंड हेड एंट्रैपमेंट, एंड ऑल्सो ये जो कॉर्ड है यहाँ पे उसका जो कॉर्ड है वो बाजू के वजनल वॉल्स के बीच में एंट्रैप होके कंप्रेस हो सकता है. सो दैट इज द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट डिलीवरिंग दिस बेबी एक्टिवली बाय पुलिंग इट और बाय डूइंग द फॉलोइंग मैन्यूअर. सो व्हाट आर द मैन्यूअर्स? द फर्स्ट मैन्यूअर इज, अगर बेबी का लेग्स ऐसा फ्लेक्स्ड है, इधर इट इज इन फ्रैंक और कंप्लीट ब्रीच, यहाँ पे यू कैन सी कि बेबी इज इन फ्रैंक ब्रीच, वहां पे देयर इज फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट. यहाँ पे हम पिनार्ड्स मैन्यूअर कर रहे हैं. पिनार्ड्स मैन्यूअर में हम लोग एक उंगली डालते हैं
हम लोग एक उंगली डालते हैं उसके नी जॉइंट में और उसको हम लोग फ्लेक्स करते हैं। देखो ये एरो आपको दिखा रहा है दैट वी आर फ्लेक्सिंग इट, बाय फ्लेक्सिंग इट देन आई पुल वन लेग, देन आई पुट माय आर्म इन, देन आई पुट माय फिंगर इन द अदर लेग, आई फ्लेक्स इट सिमिलरली। इसको भी मैं फ्लेक्स करूंगा एंड देन उसके दोनों जो पैर है मैं उसको बाहर निकालूंगा और बाहर निकाल के खींचूंगा। दिस इज बेसिकली पैर को कैसे बाहर निकालना है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटल लिम्स इन ब्रीच एक्सट्रैक्शन इज डन बाय पिनार्ड्स मैन्योर। इट इज क्लासिकली डन इन फ्रैंक breech by making sure that the limbs are flexed even at the knee joint. After that, if by mistake वो हाथ ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ऐसा सर के पीछे या फिर सर के ऊपर है, what do? I do a maneuver called as Lovset's maneuver. Lovset's maneuver कहता है कि इसमें बेबी को तुम लोग 180 डिग्री पहले ऐसे घुमाओ फिर ऐसे घुमाओ सो दैट द हैंड विच वाज अबव द हेड विल फाइनली कम डाउनवर्ड्स। सो फॉर हाइपर एक्सटेंडेड आर्म्स विच आर प्रोबेबली ओवर द हेड, इसके लिए एक बार पहले इस साइड घुमाओ फिर एक हाथ रिलीज होगा, फिर उसको दूसरे साइड घुमाओ फिर दूसरा हाथ भी रिलीज होगा। बेसिकली ऐसा जो घुमाना है इसको दे कॉल एज लवसेट्स मैन्यूवर। आफ्टर दैट इज डन देन वी कम अक्रॉस, अभी सिर्फ हेड बचा है, उसका स्कैपुला मुझे दिख गया, यहाँ पे उसका स्कैपुला है, मुझे स्कैपुला दिख गया, अभी है हेड अंदर है। दिस इज एन ओल्डर मेथड, समथिंग दैट आई डोंट यूजुअली फॉलो, बर्न्स मार्शल मेथड ऑफ डिलीवरिंग द हेड आफ्टर कमिंग हेड। This is for delivering the head. यहाँ पे you let the baby hang by the vagina, then you hold the legs and then you extend it and you remove it. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंड होता है। ये हाइपर एक्सटेंड होने की वजह से दिस हेड कैन गेट एंट्रैप्ड इनसाइड और प्लस यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी हो सकती है। ये सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी ना हो इसके वजह से ये बर्न्स मार्शल मेथड इज समथिंग दैट आई पर्सनली डू नॉट फॉलो। व्हाट आई डू इज दिस मेथड व्हिच आई कॉल एज द MSV मेथड, Morris's Melly Valid Method मैन्यूअर, जिसमें आई ऑल्सो गिव अ सुप्राप्यूबिक प्रेशर सो दैट ये जो हेड है वो एक्सटेंड ना हो और सिर्फ फ्लेक्शन में रहे। वन ऑफ माई फिंगर इज प्लेस्ड ओवर मलार प्रोमिनेंस विच इज बेसिकली मेरा ये मलार प्रोमिनेंस ऑन द मलार बोन, या फिर मुंह में डाल सकता हूँ, मैं मुंह में भी डालता हूँ। आई इनफैक्ट प्रेफरली पुट माई फिंगर इनसाइड वन फिंगर इनसाइड द फीटल माउथ एंड आई फ्लेक्स इट। ये मैं फ्लेक्स करके बेबी का हेड को फ्लेक्स रखता हूँ एंड आई डिलीवर इट वजाइनली। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे उन्होंने वही बताया हुआ है मेजर्स है कि MSV इज द मेथड दैट यू हैव टू प्रेफरेबली फॉलो इज अचीव्ड ईदर बाय दैट या फिर यू कैन इवन यूज अ पाइपर्स फोरसेप्स टू डिलीवर द फीटल हेड। बेसिकली फोरसेप्स लगाओ, पाइपर्स फोरसेप्स आता है टू पुल द बेबी आउट। सो यहाँ पे पाइपर्स फोरसेप्स का यूज तुम लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड द फोरसेप्स, दिस इज अ स्पेशल लॉन्ग फोरसेप्स जहां पे सिर्फ हेड निकालने के लिए हम यूज करते हैं। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू हेल्प इन फ्लेक्शन एंड प्रिवेंट एन एक्सटेंडेड हेड। डिलीवरी यूजिंग बर्न्स मार्शल मेथड इज नॉट एडवाइज बिकॉज एक्सटेंशन की वजह से सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी बेबी को हो सकता है, सो ये अवॉइड करो। द नेक्स्ट इज ऑल फोर्स पोजीशन में पेशेंट को रखो। ऑल फोर्स पोजीशन मतलब क्या है, अगर मदर है, ये मदर अगर है और उसका बॉडी है तो उसका हाथ इधर और उसका पैर इधर ऐसा रखो ताकि ये जो एरिया है दिस बिकम्स लॉट मोर रूमी फॉर मी टू डिलीवर, बट इट इज समथिंग दैट आई डू नॉट बिलीव इज प्रैक्टिकल इनफ, सो वी डोंट डू, बट दिस थिंग यू हैव टू रिमूव। यू हैव टू रिमेंबर कि ऑल फोर्स मेथड इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग। मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच प्रीटर्म, यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड दैट यू कैन डेफिनेटली गिव देम अ ट्रायल। दे से दैट रूटीन सिजेरियन सेक्शन is not recommended, but given the fact that there is a higher risk of head entrapment क्योंकि head is going to be छोटा than the head is going to be bigger than the abdominal circumference as we have already discussed, there is a higher chance of head entrapment। अगर head entrapment हो गया तो क्या करेंगे, if this is your cervix जहां से ऐसे दो ब्रीच आ रहे हैं नीचे से, if this is your cervix then I'll be doing a Derson's incision जहां पे मैं इधर incision मारूंगा at 10 o'clock and 2 o'clock so that the cervix is cut open and I can deliver the baby immediately. We call it the Derson's incision, something that will lead to a lot of bleeding, torrential bleeding, something that you would not really want to do, but Derson's incision is something that you can do। यहाँ पे भी उन्होंने mention किया हुआ है that you can do a cervical incision if there is head entrapment। So that is it about preterm labor। Finally the question arises, अगर breech है और twins है तो क्या? So either the thing can be first baby can be breech and or second baby can be in breech। So if the first baby is in breech
वी जनरली रेकमेंड LSCS बिकॉज द रिस्क ऑफ, एक तो प्रीटर्म बेबी है क्योंकि ट्विंस है, ट्विंस ऑफन डिलीवर प्रीटर्म में, वो भी अगर DCDA रहा तो ठीक, इफ इट इज MCDA और MCA में डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, जस्ट डू अ सिजेरियन सेक्शन. अगर DCDA रहा एंड द फर्स्ट बेबी इज इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, इट विल बी अ प्रीटर्म बेबी, अगेन द रिस्क ऑफ हेड entrapment is high, preferably deliver it by cesarean section. If you try to deliver it vaginally, be careful that you don't end up trapping the head. For the second baby, अगर ब्रीच में है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, यू कैन ईदर डू एन इंटरनल पोडालिक वर्जन, जहां पे तुम लोग पैर खींच के उसको पैर एक्सट्रैक्ट करते हो. यू डू ब्रीच एक्सट्रैक्शन. इंटरनल इज बेसिकली आई इंसर्ट माई हैंड इनसाइड द यूट्रस एंड आई पुल द बेबीज फीट एंड आई पुल इट आउटसाइड. आई डू ब्रीच एक्सट्रैक्शन. Or I can do an LSCS for second baby if it is in breech and if it is having an extended head or any of the high risk factors that we had already mentioned. Ideally, I prefer to do an IPV and deliver it vaginally if the second baby is in breech presentation, but a lot of times I have had to resort to LSCS because I have not been able to grasp the baby's feet properly. So that is it about the green top guidelines on breech presentation. I hope you all understood this topic. It's a topic that fetches a lot of interest in me. I've tried to finish the topic within half an hour so that you all can quickly read it and go and answer in your exams. I hope you all had a good understanding of this topic today and you all learned all the major maneuvers that we shall be doing. We spoke of 4 major maneuvers यहाँ पे. The first one was Pinard's maneuver जहाँ पे हम लोग leg extend करते हैं. The second one was Burns Marshall maneuver and the third one was एक Lovesett भी हमने पढ़ा था for hyper extended arms, and the final one was MSV maneuver, which is something that I prefer to practice and even it is recommended by Green Top guidelines. Preterm breech, there is no problem that you can deliver them vaginally, but there is always going to be a higher risk of having entrapped head wherein you might need to incise the cervix, and incising the cervix is a very bloody bad process. It will bleed a lot. It will lead to fornical tests. You wouldn't want to do that. Hence, people prefer to do for preterm vaginal deliveries. They just decided to do a cesarean section. So I hope you had a good session learning with me. I shall meet you next week in yet another episode of Guideline Review of the Week. Until then, this is Dr. Aditya signing off.